Hello. Can someone just please let me know, am I audible enough? Yes, you are audible. Yes. Okay, thank you, sir. Just, yes. So, good morning, everyone. Welcome and thank you for dialing in for our webinar today. I am Sanskriti Bhatia, a member of IEEE VGEC Student Branch from Instrumentation and Control Department, SEM 2. And I am the host for today's session. Let me begin with a glimpse of the work done by the IEEE Student Branch. A student branch gives students the opportunity members and professionals in the field. An active IEEE student branch can be one of the most positive designated fields of engineering and information technology. It is my honor to welcome you all, the faculty members and the students in this webinar. We are truly blessed with your presence. It gives me immense pleasure to extend to you a very warm welcome on the behalf of the IEEE VGEC student branch, who has clubbed all of us in the webinar on engineering optimization using bio-inspired swarm optimization techniques. To felicitate the gathering, let me invite our expert, most beloved Dr. Hiren D Mehta, who is a very familiar face and an active participant in all the activities of this college. With more than 27 years of teaching experience, he completed his PhD in 2016 on design optimization, performance analysis, and cost estimation of transformer using artificial intelligence techniques from RK University, Rajkot. He has a keen interest in design optimization using various optimization techniques such as genetic algorithms, particle swarm optimization, and teaching learning based optimization. He has been invited to more than 15 events as a speaker and has submitted numerous research papers on different topics. Currently, he is the Chairman and Branch Counselor of IEEE VGEC. We are very excited to have him with us and to enrich us all with this vast knowledge. Now I hand over this session to you, sir, and we are looking forward to hearing words of wisdom from you. Over to you, sir. Okay, thank you for such nice introduction. First of all, I would like to confirm whether I'm audible to everybody or not. Am I audible? Yes, okay. sir, you are. Yes, sir, you are. Okay, fine. So thank you for such a nice introduction. Actually, today I have been invited to deliver a talk on bio-inspired swarm optimization techniques. And basically, I am going to concentrate today on particle swarm optimization. Now, see one thing, my lecture would be a mixture of Hindi and English because I have been told that many of the students, they find it difficult to understand if the lecture is in English only. And personally, I feel that language should not be a barrier between the speaker and the audience. So my lecture would be a mixture of Hindi as well as English. Okay. Now, what I'll do is, in between, I'll switch off the video also, because sometimes it does happen that we do get limited bandwidth, and there is a huge time lag if the video is on constantly. Correct. So what I'll do is, if there is a problem, what I'll do is I will switch off the video in between. Okay. Now I'll present my screen. Okay, so now I have shared my screen. Is it visible to everybody? Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. So, yes, sir. Okay, thank you. So now today's topic is engineering optimization using bio-inspired swarm optimization techniques. So first of all, let us try to understand what do you mean by optimization and what do you mean by swarm optimization. And then we will also understand what do you mean by bio-inspired swarm optimization. Correct? Okay. So now, first of all, let us try to understand what is meant by optimization. Correct.
See, optimization is nothing, but it is the process of making something better. Correct. So basically, see what happens is an engineer or a scientist comes up with a new idea, and what optimization does, it improves on that idea. Correct. I will give you one say example. Suppose if one person invented a car, correct? Say way back before say 100 years or something like that. Now I want to improve on that idea. So how I can improve? See, suppose I can do like that. Okay, I can improve the mileage of the car without sacrificing the other parameters, performance parameters of the car. If I'm able to do that, suppose if the car is giving a mileage of say 15 kilometers per liter, and if I improve it to say 17 kilometers per liter without significantly sacrificing the other performance parameters of that car, then I can say that I have optimized that. Correct. For example, now you are having inverter-based ACs. See, earlier what used to happen that the AC, when a predetermined temperature was reached, it used to cut off and then again it used to switch on. So what used to happen that it was drawing a large starting current when it was switching on. पहले क्या होता था कि ये जो AC जब switch on होता था तो it was drawing a large starting current और उसकी वजह से power consumption was increased momentarily. So if you are having these inverter based ACs, what they do is they are constant, this switch on and switch off condition is now gone. Correct. So it consumes less power and gives the same cooling. So what do we say? We have optimized that. Correct. Okay. So optimization basically consists in trying variations on an initial concept. We already have that concept and then using the information gained to improve on that idea. Correct. That is basically optimization. So a computer is the perfect tool for optimization if the data can be input in electronic format. So basically, you see what we are doing in optimization is either we are trying to minimize something or we are trying to maximize something. Suppose if I want to maximize the efficiency of an induction motor, so without significantly sacrificing other parameters. Correct. So that is optimization. If I want to minimize the cost of a transformer, if I want to minimize the cost of a car, correct, without noticeably sacrificing other parameters, then it is optimization. So basically, I can say that optimization is either minimizing or maximizing depending upon our requirement. Correct. So if we have the computer, then we can try, correct, unless and until we get some solution. Correct. So feed the computer some data and out comes the solution. Then we ask, is this the only solution? Often it is not. Correct. Is it the best solution? Now that's a tough question. Correct. How can we say that it is the best solution? Correct. Because the definition of best solution also varies from person to person. जैसे मुझे ऐसा है कि भाई मुझे ऐसी कार चाहिए कि जिसका पावर ज्यादा हो, तो that is my best solution. दूसरा कोई ऐसा है बंदा जिसको भाई मुझे तो माइलेज ज्यादा चाहिए, तो उसका जो है ऑब्जेक्टिव अलग है, मेरा ऑब्जेक्टिव अलग है. So best solution, the definition of best solution varies from person to person. Correct. Now suppose मैं ऐसा मानता हूं कि भाई मुझे जो है कॉस्ट इफेक्टिव कार चाहिए, ठीक है, और मिनिमम इतने परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में वो खरी उतरनी चाहिए, तो फिर वो मुझे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा. तो ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो वी हैव टू डू सम ट्रायल्स, वी हैव टू फीड द कंप्यूटर सम डेटा एंड देन वी गेट द सॉल्यूशन. Then the real problem starts that is it the best solution? Correct. तो अब हम क्या कर सकते हैं? See, actually, we do optimization in our daily life, but we don't understand. Correct. Or we don't realize. Correct. See, at what time should we get up in the morning so that we can maximize the amount of sleep and still make it to the work on time? That is also optimization. ठीक है, जैसे आप लोग भी जो है ऑप्टिमाइजेशन करते हो कि भाई सिर्फ इतना घंटा या इतने आवर्स पढ़ के, ठीक है, हम मैक्सिमम ग्रेड कैसे ला सकते हैं? ठीक है, व्हाट शुड वी डू? So that is also optimization. Correct. Which is the best route to work? When we go to our workplace or when you go to your college, you always
select the shortest route. Perhaps. Why I'm saying perhaps? Because shortest route might have more traffic, so it might not be suitable. So that's why I'm not saying which is the shortest route, but which is the best route to work, to go to your workplace. Correct? Which project do we tackle first? So actually we are doing where should I invest so that I will get maximum returns? That is also optimization, maximization or minimization. So basically, optimization is the process of adjusting the inputs or some characteristics of a device, adjusting the characteristics of a device, or some mathematical process, or we are doing some experiment to find the minimum or maximum output or some result. Correct? That is basically optimization. So now see, there are many conventional optimization techniques. Correct? You have studied in mathematics also. See, if you remember, mathematics में आप लोग क्या करते थे कि suppose आपको minimization या maximization करना है, ठीक है? तो you have some function say fx. You are having a function say fx. Correct? तो उसमें आप क्या करते थे optimization के लिए? You take the derivative, correct? F dash x, correct? F dash x आपने निकाला, ठीक है? And then what you do? You equate it to 0. And you find some condition. Now, if you want to do maximization, तो आप क्या करोगे? Again, you will find f double dash x. Means you take the double derivative. एक बार उसका differentiation करोगे, दूसरी बार आप उसका differentiation करोगे, आपको maximization करना है. तो maximization में आप क्या check करोगे? Double derivative, it should be less than 0. And you find out some condition. Similarly, minimization करना है, तो भी आप यही करोगे, f dash x equal to 0. और मिनिमाइजेशन में आप क्या करोगे? You will check for a condition where f double dash x is greater than 0. Correct? Okay. So now, what happens is that you will have to differentiate. This is traditional optimization, जो हम सीखे हैं मैथ्स में, ठीक है, मैथमेटिक्स में, कि भाई आपने मान लो कि मिनिमाइजेशन के मैक्सिमाइजेशन करू हो, अगर हमें मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन करना है, तो हम जो सीखे वो क्या है? You differentiate that function, equate it to 0, find some condition. And if you're doing maximization, then you take the double derivative, then it should be less than 0, find some condition, and that would result in maximization. Okay, this is one method. ऐसे कई methods हैं. There are many methods for optimization, correct? और उसमें हम traditional methods use करते हैं. अब traditional methods में problem क्या है मैं आपको बताऊं. जैसे यही method जो मैंने आपको अभी बताई, you will have to take the derivative. Means function should be differentiable. Means you should be able to obtain the derivative of that function. ठीक है? Sometimes the functions are so complex that you are not able to obtain the differentiation. It is very, very difficult to obtain the derivatives of that function. Correct? तो उसमें फिर बहुत प्रॉब्लम होता है. तो अब ये जो swarm optimization techniques है, उसमें क्या है कि डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं है. You can directly use the function. फंक्शन का मतलब क्या है? चलो वो भी मैं समझा देता हूं. मान लो कि आपको कार की कॉस्ट मिनिमाइज करनी है. So your objective function fx that is equal to cost function of a car. ठीक है? That is the cost function. This is the cost of a car. ठीक है? अब cost of the car depends on various parameters. या तो चलो मैं इजी लेता हूं कि you want to minimize the cost of a induction motor. ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? बहुत सारे पैरामीटर्स है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि डिपेंड्स ऑन द डायमीटर d ऑफ द रोटर एंड लेंथ l ऑफ द रोटर. ठीक है? डायमीटर d ऑफ द रोटर एंड लेंथ l ऑफ द मोटर. तो हमें इंडक्शन मोटर का कितना डायमीटर रखना चाहिए और कितनी लेंथ रखनी चाहिए ताकि हमें इंडक्शन मोटर जो हम बना रहे हैं, जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट मिनिमम हो. अब उसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं. जैसे मान लो कि हम 5 HP की मोटर बना रहे हैं या 10 HP की मोटर बना रहे हैं. ठीक है? तो अब उसमें हमें कितना डायमीटर रखना है, कितनी लेंथ रखनी है ताकि जो हमारे इंडक्शन मोटर की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो मिनिमम हो. ठीक है? उसमें भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स आते हैं, लेकिन वो अभी कंस्ट्रेंट्स की मैं बात नहीं करूंगा, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड. दैट वी विल सी एट अ लेटर स्टेज.
लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि फॉर द टाइम बीइंग वी हैव एज्यूम्ड कि इंडक्शन मोटर की जो कॉस्ट है इट डिपेंड्स ऑन द डायमीटर डी ऑफ द रोटर एंड लेंथ एल ऑफ द रोटर. सिर्फ इतना एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है. तो ये डी और एल जो है वो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स बन गए. डिसीजन वेरिएबल्स यानी हमें डिसाइड करना है कि उसका हम कितना डायमीटर रखें, कितनी लेंथ रखें, क्यों, ताकि जो हमारी कॉस्ट है इंडक्शन मोटर की वो मिनिमम हो. सो दीज आर द डिसीजन वेरिएबल्स. ओके, सो there is one objective function or the optimization function. So that objective function is the cost function. That cost we have assumed that it depends on diameter d and length l. तो सबसे पहले जब भी हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो पहले हमें हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ेगा. ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. करेक्ट, व्हाट वी वांट टू डू. करेक्ट, सपोज इफ यू वांट टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर, तो पहले इंडक्शन मोटर की कॉस्ट कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, कौन से वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, वो डिसीजन वेरिएबल्स हमें मालूम होने चाहिए. दूसरी बात, डिसीजन वेरिएबल्स की भी लिमिट होती है ना. व्हाई? क्योंकि डायमीटर एक हद से ज्यादा आप बड़ा भी नहीं रख सकते, एक हद से ज्यादा आप छोटा भी नहीं रख सकते. सिमिलरली लेंथ शुड नॉट एक्सीड अ पर्टिकुलर लिमिट, इट शुड नॉट बी बिलो अ पर्टिकुलर लिमिट. So each and every decision variable has its own limits. Correct? Because if the diameter is very, very small, correct? Or if the diameter is very, very big, then it will not fit in a particular area. If the diameter is very, very small, then its length will increase. Then also it will not fit in a particular space. So decision variables जो है हमारा diameter और length, उसकी कुछ limits होती है. ठीक है. So whenever when we are doing any optimization, we have some decision variables, और वो जो decision variables होते हैं उसकी कुछ limits होती है. Okay, so now we have understood what is optimization. Optimization is either minimizing or maximizing. पहले optimization में हमें एक objective function decide करना पड़ेगा. वो objective function हमने decide कर लिया, उसके बाद वो objective function का हमें equation बनाना पड़ेगा. ठीक है. वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसी डिसीजन वेरिएबल्स पे डिपेंड करेंगे, तो हमें पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि भाई हमारी जो कॉस्ट है कौन कौन से वेरिएबल्स पे आधारित है, ऑन विच फैक्टर्स डज आवर कॉस्ट डिपेंड. फाइन, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट फर्स्ट, एंड वंस दैट वी हैव आइडेंटिफाइड वी हैव टू आल्सो फिक्स द लिमिट्स ऑन डिसीजन वेरिएबल्स. करेक्ट, कि व्हाट शुड बी द लिमिट्स, मींस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू. ओके, सो नाउ अप टू दिस पॉइंट वी नो what is optimization, what is objective function, and what are decision variables. Now we come on to swarm optimization technique. Okay, we have understood the drawbacks of traditional optimization because we have to do a lot of mathematics. We have to differentiate, correct? And if sometimes the cost function is so much complex, then we won't be able to differentiate it. Or we may, but a lot of effort would be involved, correct? और इसमें जो है swarm optimization में no differentiation is required, so that is the advantage. Okay, now we go on to what is swarm optimization. See, swarm means what? Group. जैसे हम बोलते हैं ना swarm of bees means number of bees. We say a school of fish. We say pride of lions. Pride of lions means what? Group of lions. So swarm is nothing but a group. Now see, why swarm optimization techniques? वो हम क्यों यूज करें? See, मान लो कि आप जब कोई प्रोजेक्ट करते हो फाइनल ईयर में, या तो डिजाइन इंजीनियरिंग में कुछ करते हो, ठीक है, तो मान लो कि एक प्रोजेक्ट में सिर्फ एक लड़का नहीं होता है. There are 3 to 4 students in a particular group of project. Why? Because see, एक जो लड़का है उसके प्रोग्रामिंग अच्छी है, दूसरा जो लड़का है मान लो कि वो टेक्निकली अच्छा है, तीसरा जो लड़का है वो रिपोर्ट अच्छा बना सकता है, मींस ही इज गुड इन इंग्लिश. तो अल्टीमेटली सी, यू आर यूजिंग द कलेक्टिव इंटेलिजेंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स टू accomplish a particular task. Correct? So swarm means what? Group. तो जनरली प्रोजेक्ट में जो है जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ग्रुप क्यों होता है? बिकॉज सी, each and every student is using his or her own collective intelligence to accomplish a particular task.
ठीक है. व्हाट इज द टास्क इन दिस केस? मान लो कि हमारे टास्क क्या है? टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर. करेक्ट. सो there are 4 to 5 people or 4 to 5 students in a particular group, and each and everyone is using his own intelligence to accomplish a particular task. ठीक है. तो this swarm optimization techniques, there are many swarm optimization techniques. Initially this first technique came up, that was the particle swarm optimization. Then came the artificial bee colony, और बहुत सारे आए. Ant colony optimization, gray wolf optimization, cuckoo search algorithm, firefly algorithm, cat swarm optimization algorithm, and teaching learning based optimization algorithm. Now why these algorithms came up? ये algorithms कैसे आए? किसको ये प्रेरणा मिली ये सब algorithms बनाने की? Correct. Who was inspired? Correct. And why? See, I'll give you the answer. See, actually humans have always tried to copy nature. We have always tried to mimic nature. See, we humans saw the birds and we invented aeroplanes. Correct. We humans saw fish and we invented submarines. So ultimately, see, what we are doing is we are always trying to copy nature. Correct. So what happened was, many of the researchers who gave these algorithms, करेक्ट, जैसे ये पार्टिकल सॉर्म ऑप्टिमाइजेशन है, आर्टिफिशियल बी कॉलोनी है, आंट कॉलोनी, जैसे फॉर एग्जांपल आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन. सो दिस एल्गोरिथम वाज गिवन बाय एम डोरिगो. करेक्ट. व्हाट ही डिड वाज डोरिगो. करेक्ट. आई एम नॉट राइटिंग द नेम डोरिगो. ओके, आई एम एबल टू राइट इट प्रॉपर्ली. ओके. सो व्हाट ही डिड वाज ही ऑब्जर्व्ड द बिहेवियर ऑफ आंट्स. कि जैसे मान लो कि आपके घर में कहीं मिठाई गिर जाती है फर्श पे. करेक्ट. ओके. Then within a few minutes, these ants will come to that sweets. Correct. And have you observed? They always follow the shortest route because they deposit pheromones on the route. So ultimately, what happened was that this researcher Dorigo, he found out कि भाई ये ants जो है कैसे अपना रास्ता बना लेती हैं. And see, actually what they are doing, they are solving their own problem because they want to eat every day. So what is their solution? They want food. And how they are optimizing? They are finding the shortest route to their food. ठीक है. So based on, from getting inspired from ants, this M. Dorigo proposed ant colony optimization algorithm. ठीक है. तो इस तरह से हर एक, जैसे particle swarm optimization, it was proposed by Kennedy and Eberhard. Correct. उन्होंने ये देखा कि ये जो birds हैं, swarm of birds, ये कैसे अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, कैसे जो है फूड का सोर्स ढूंढ लेते हैं. ठीक है. तो ही कॉल्ड दिस बर्ड्स एज पार्टिकल्स. मींस पार्टिकल्स, इट कैन बी एनीथिंग. करेक्ट. दे कैन बी बीज इन आर्टिफिशियल बी कॉलोनी, दे कैन बी एंट्स इन एंट कॉलोनी, दे कैन बी वुल्व्स इन ग्रे वुल्फ ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम एंड सो ऑन. करेक्ट. तो बेसिकली जो है, मान लो कि हमारा कोई प्रॉब्लम है, उसका हमें बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढना है, तो क्या हम नेचर से इंस्पायर होके ऐसा कुछ एल्गोरिथम बना सकते हैं क्या? ये रिसर्चर्स ने ये सब सोचा. एंड द फर्स्ट swarm optimization algorithm came up in this 1995, and that was this particle swarm optimization, this one. Correct. So basically it is a bio-inspired algorithm. Correct. It has been inspired from nature. Correct. कि जैसे ये लोग अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, ठीक है, कि भाई they always find the best solution. Correct. So can we use this techniques to find the solutions to our problems? जैसे हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ अ मोटर, तो क्या हम वो कर सकते हैं? ओके, सो लेट्स सी. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द पार्टिकल सॉर्म ऑप्टिमाइजेशन. सी, इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम नेचर, दैट इज सोशल बिहेवियर एंड डायनेमिक मूवमेंट्स with communication of insects, birds, and fish. Correct. So it was inspired from nature. These researchers, correct, they got inspired from nature. The researchers were James Kennedy and Russell Eberhard. Correct. They gave this algorithm in 1995, and it combines self-experiences with social experiences. Now, what do you mean by self-experience and social experience? जैसे मान लो कि आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है,
और एक स्टूडेंट ऐसा बोलता है आपकी टीम में कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो क्या है कि ये सोशल एक्सपीरियंस है जो आपके जो ग्रुप मेट्स हैं वो दे रहे हैं, और फिर आपका खुद का भी एक एक्सपीरियंस होगा कि भाई ये बोल रहा है ये तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं करना है, थोड़ा हम ऐसा चेंज करें तो कैसा रहेगा. So that is your own experience. So this particle swarm optimization, it combines self experiences with social experiences. Okay. Before proceeding further, let me ask whether my voice is reaching you properly or not. Should I keep the video on or should I switch it off? Because if it is not reaching properly, then I will have to switch off the video. No, sir, you are clearly audible. Okay, fine. Then it is okay. Fine. Okay. So now, let us concentrate. See, if we try to study all these swarm optimization techniques, it will be difficult. So initially, we will start with PSO. And once you understand one swarm optimization technique, then it becomes easy for you to understand other optimization techniques, particularly swarm optimization techniques. So PSO is based on the behavior of a colony or a swarm of insects, as I told you, such as ants, termites, bees, and wasps, a flock of birds, or a school of fish. The particle swarm optimization algorithm, it mimics the behavior of these social organisms. And as I told you, the word particle, what it denotes, it denotes a bee in a colony or a bird in a flock. So now, what happens in PSO is that each individual or particle in a swarm behaves in a distributed way. I told you that it uses its own intelligence as well as the collective or the group intelligence to accomplish the task. And as such, if one particle discovers a good path to food, the rest of the swarm will also be able to follow the good path instantly, even if their location is far away in the swarm. Okay, I'll explain this with the help of an example. Okay, the swarm is assumed to be of specified or fixed size, with each particle located initially at random locations in the multi-dimensional design space. अब इसका मतलब क्या है, चलो मैं समझाता हूं. Suppose मान लो कि एक रूम है, so that is our search space. एक रूम है, ऐसा assume कर लो. There is one room. ठीक है, अब ये रूम है, which is some fixed space or fixed dimension. करेक्ट. अब उस रूम के अंदर assume करो कि भाई बहुत सारे सिक्के पड़े हुए हैं. There are some coins, each having a different value. यानी कोई 1 रुपए का है, कोई 2 रुपए का है, कोई 5 रुपए का है, इस तरह से है. ठीक है. अब उस रूम के अंदर मान लो कि मैं 10 स्टूडेंट्स को भेजता हूं. So there are 10 particles. Oh, sorry. Okay. So there are 10 students. तो उस 10 students को मैं particles बोलूंगा. So there are 10 students. I'm sending 10 students into this room. Correct. तो मान लो कि ऐसे मैंने अभी 3 दिखाए हैं. Assume that there are 10 students which I am sending these students to this room. Correct. अब ये स्टूडेंट्स का टास्क क्या है? They have to find a coin which has the maximum value. अब ये रूम में बहुत सारे कॉइन्स पड़े हुए हैं. ठीक है, कोई 1 रुपी का है, कोई 2 रुपी का है, कोई 5 रुपीज का है, कोई 10 रुपीज का, ऐसा एज्यूम कर लो. अब मुझे मालूम नहीं है कि भाई कोई 100 रुपए का सिक्का भी है कि नहीं. See, once 100 rupees coins were also launched, correct? Okay, let us forget that. लेकिन for the time being मुझे मालूम नहीं है कि इस रूम के अंदर which coin is having the maximum value. So what I did was I fixed a number of particles say equal to 10. 10 particle यानी 10 स्टूडेंट. किस में ढूंढना है? इस रूम में ढूंढना है. So the design space is fixed. Correct. So that I told you that swarm size is fixed, that is 10. So जैसा the swarm is assumed to be of specified or fixed size. For the time being, let us assume that swarm size is 10. ठीक है. Okay. And now what they have to do is we have our design space. Design space is our room. Correct. जिसमें हमें ढूंढने हैं ये coins. ठीक है. So I will assign this task to say, for example, 10 students. So what they will do is all the 10 students, they will move in this room.
So they will have their own positions. Initially मान लो कि ये सब ये पोजीशन पे हैं, and at this position if they find a coin, तो वो लोग क्या करेंगे? They will evaluate the value of that coin. So this student will evaluate the value of the coin that he has found out. This student will also evaluate the value of the coin which he has found out. This student will also find out the value of the coin. Then what they will do? For example, ये स्टूडेंट को जो है 1 रुपए का कॉइन मिला. फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट है, इसको 5 रुपए का कॉइन मिला, और ये स्टूडेंट है, इसको 2 रुपए का कॉइन मिला. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, उसको 2 रुपीज का मिला. सो नाउ फॉर द टाइम बीइंग इट विल लुक कि भाई ये 5 रुपए वाला जो कॉइन है, इट हैज द मैक्सिमम वैल्यू. सो ईच एंड एवरी वन शुड गो टुवर्ड्स दिस स्टूडेंट. Each and every student should try to go towards this student. Why? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो स्पेस है, यहां पे जो है अच्छे कॉइन्स मिलने की संभावना ज्यादा है. बट व्हाट दे विल डू इज दे विल नॉट गो डायरेक्टली. जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट यहां पे है जिसको भी 1 रुपए का कॉइन मिला, ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट है डायरेक्टली यहां नहीं पहुंच जाएगा, लेकिन वो रास्ते में एक्सप्लोर करते हुए जाएगा. Why? क्योंकि उसको ऐसा है कि रास्ते में शायद 10 रुपए का कॉइन भी मिल जाए. सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल हैव अ पोजीशन, as well as each and every student will have some velocity. Why velocity? Because it will go towards the student who has found out the coin which is having maximum value. ठीक है, तो ultimately क्या हो रहा है कि initially particles will have their own positions, as well as they will evaluate the value of the coin which they have found at their positions. Then they will compare all the values, और जिस स्टूडेंट के पास ऐसा कॉइन है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो सभी जो पार्टिकल्स हैं उसकी दिशा में जाएंगे. They will go in that direction. लेकिन डायरेक्टली वहां नहीं पहुंच जाएंगे. Why? Because they are using the collective intelligence as well as their own intelligence. Because they know कि रास्ते में मुझे कुछ ऐसा कॉइन भी मिल जाए जो 5 रुपए से जिसकी वैल्यू ज्यादा है. मान लो कि अब ये स्टूडेंट है, अब यहाँ पे इस रास्ते में जा रहा है और उसको बीच में कहीं 10 रुपए का कॉइन मिल गया, तो वो वहीं पे रुक जाएगा और सबको बोलेगा कि भाई मेरे पास जो कॉइन मिला है वो 10 रुपए का है. तो अब सभी स्टूडेंट्स इसके पास आने लगेंगे, 10 रुपए वाला जो है स्टूडेंट उसके पास आने लगेंगे. सो ऑल दी स्टूडेंट्स विल नाउ गो टुवर्ड्स द स्टूडेंट हु हैज फाउंड आउट अ कॉइन having higher value. Correct. So ultimately what will happen, all these particles will keep on moving in the search space until and unless all of them agree कि भाई अब इससे ज्यादा वैल्यू का कॉइन हमें नहीं मिल सकता. Means we have got the solution. What was our problem? To find a coin in a particular room which is having the maximum value. That was our objective function. तो हमने कितने पार्टिकल सिलेक्ट किए? फॉर एग्जांपल 10. नाउ मेनी ऑफ देम आस्क व्हाई 10, व्हाई नॉट 5, व्हाई नॉट 20, व्हाई नॉट 30. वो आंसर्स मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ नाउ, बट फॉर द टाइम बीइंग व्हाटएवर आई एम सेइंग यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. करेक्ट. सो व्हाट विल हैपन इज ऑल ऑफ देम विल इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ द कॉइन्स, और जिसके पास सबसे ज्यादा वैल्यू का कॉइन है उसकी तरफ सब स्टूडेंट्स जाएंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं पहुंच जाएंगे, वो रास्ते में एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे. Because they are using their own intelligence as well as collective intelligence. Okay, fine. So now, as I told you, that each particle is assumed to have 2 characteristics, a position and a velocity. Correct? So initially उसकी position भी होती है और थोड़ी velocity भी होती है. Velocity क्यों? Because it is going towards that student who is having the maximum value of that coin. Correct? So each particle wanders around in the design space and remembers the best position in terms of food source or objective function value it has discovered. And also I told you that particles communicate with each other. So the particles communicate information or good positions to each other and adjust their individual positions and velocities based on the information received on good positions. Correct. Okay. So now this is the basic idea of a PSO. Now steps involved in PSO. Set the initial parameters. Now what are the initial parameters that we will see? Generate population of particles. Okay, particles कितने रखने हैं? जैसे मैंने अभी बोला कि 10 स्टूडेंट्स को मैंने ये टास्क असाइन की है, ठीक है?
तो population of particles, that is 10. Correct. Okay. So you can keep 10, you can keep 20, okay, you can keep 50, लेकिन उससे ज्यादा मत रखो, क्योंकि आपको मालूम होगा कि एक ही प्रोजेक्ट में अगर 50 स्टूडेंट आ गए तो प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट ही नहीं होगा. करेक्ट, क्योंकि आपको मालूम है कि एक ये बोलेगा ये करना चाहिए, दूसरा बोलेगा ये करना चाहिए, तो एक्चुअली पार्टिकल्स कितने रखने चाहिए? So research says that more than 50 to 60 particles are not required for solving a particular problem. You can also keep 30, not an issue. Correct. This is based on experience. Correct. Okay. Evaluate the objective function. Objective function is also sometimes known as the fitness function or the fitness value. Correct. Okay. Then select the individual particle best by comparing the fitness. P best means particle best. वो मैं समझाऊंगा उसका मतलब क्या है. ठीक है, particle best by comparing the fitness value at the current position to the best fitness value at any time. Now this is difficult to understand, so I explain it with the help of an example. And its location to the best particle in the group corresponding to optimum fitness value. See, sentences 4 and 5, they are difficult to understand. तो ये जो है मैं जब एग्जाम्पल लूंगा एट दैट टाइम इट विल बी मोर क्लियर. ओके, नाउ आई टोल्ड यू दैट इफ ऑल द पार्टिकल्स converge to the same set of values, means if all the positions of all the particles converge to the same set, यानी सभी स्टूडेंट एक जगह पे जमा हो गए कि भाई 10 रुपए का एक यही कॉइन है और कहीं पे भी नहीं है. करेक्ट. नाउ यू मे आस्क मी कि 10 रुपए का मान लो कि एक ही कॉइन नहीं है, 3-4 है, तो क्या होगा? That answer I will give. Correct. But for the time being, you assume that there is only one best solution. Correct. So all the students will converge on that 10 rupees coin and they will collectively say, sir, ये जो है हमें जो ये 10 rupees का coin मिला इस रूम में, it is having the highest value. इससे ज्यादा कोई वैल्यू वाला coin इस रूम में नहीं है. Means we can say that method is converged. Converged means we have obtained the solution. If the convergence criterion is not satisfied, then step 3 is to be repeated. What is step 3? Again, you have to evaluate the objective function and fitness value, and again, you have to adjust your velocity as well as position. Correct. And then you have to update the new values of P best and G best. वो कैसे करना है? P best means particle best or G best means global best. For the time being, you don't know what is P best and what is G best. That I will explain with the help of an example. ठीक है? But you have to update P best and G best. वो कैसे update करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा. Correct. So this iterative process का मतलब क्या है? What do you mean by iterations? Okay. Iterations means trials. कि पहली ट्रायल में हमें चलो सिर्फ 1 रुपए का ही कॉइन मिला, दूसरी ट्रायल में 2 रुपए का मिला. ठीक है. ओके, 10 रुपीज का मिलेगा, उसके बाद भी हम ट्रायल तो चालू रखेंगे, लेकिन फिर अब उससे ज्यादा वैल्यू वाला नहीं मिलेगा तो हम 4-5 ट्राई करने के बाद छोड़ देंगे. भाई ओके, अब ज्यादा इटरेशंस की जरूरत नहीं है. सो द इटरेशंस मींस व्हाट? नंबर ऑफ ट्रायल्स. सो द इटरेटिव प्रोसेस इज कंटिन्यूड अंटिल ऑल द पार्टिकल्स कन्वर्ज टू द सेम ऑप्टिमम वैल्यू, और इफ यू फिक्स्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस कि भाई 200 ट्राई से ज्यादा नहीं करना है. ठीक है, बस उतने से ज्यादा नहीं करना है. सो हाउ डू वी टर्मिनेट दिस प्रोसेस? Either all the particles they converge to the same optimum value or maximum number of iterations are reached. Correct. Okay, so this is the convergence criteria. Now those students who are in Google Meet, let me ask them, is it clear up to this point? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. See, if you have any questions in between, you can ask, particularly those who are in Google Meet, because I don't know those things which I am discussing, is everybody able to comprehend properly or not? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Okay. So now, what are the basic equations for PSO? ये जो 3 mathematical equations हैं, यही हम use करेंगे particle swarm optimization में. To make things simple, ठीक है. Now please try to understand this. मान लो कि पहला इटरेशन है, उसमें 10 पार्टिकल हैं टोटल. सी सपोज देयर आर 10 पार्टिकल, तो हम पहला इटरेशन करते हैं. सपोज
तो 1 2 3 ये तीनों पार्टिकल्स कुछ जो है वैल्यूज फाइंड करेंगे अप टू 10। फिर हम दूसरा इटरेशन कर देंगे, उसमें भी ये 10 पार्टिकल्स जो हैं दे विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज से मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। फिर तीसरा इटरेशन करेंगे, उसमें भी ये 10 पार्टिकल हैं, दे विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कॉइंस दैट दे हैव फाउंड आउट। करेक्ट। तो ऐसे हम इटरेशंस करते जाएंगे। इटरेशंस मैंने बताया, इटरेशंस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बताता है, Vj of I. What does this indicate is velocity of the jth particle in the ith iteration. Again, I am repeating. What does this indicate? Vj of I, उसका मतलब क्या है, velocity of the jth particle in the ith iteration. तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई velocity of the third particle in the second iteration. ऐसा जब मैं लिखता हूं तो उसका मतलब क्या है कि ये जो है ये मेरा सेकंड इटरेशन है, दिस वाज माय सेकंड इटरेशन यानी सेकंड ट्राई। ठीक है, दिस वाज माय सेकंड इटरेशन, दिस वाज द फर्स्ट इटरेशन। करेक्ट। तो जब मैं ऐसा लिखता हूं कि v3 ऑफ 2, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ दिस इज j, वेलोसिटी ऑफ द जेथ पार्टिकल, जेथ पार्टिकल यानी थर्ड पार्टिकल यानी दिस पार्टिकल, in which iteration? Second iteration. Correct. So जब मैं ऐसा लिखता हूं Vj of I, what it indicates is it is the velocity of the jth particle in the ith iteration. Correct. Okay. That is equal to, now for the time being आप ये भूल जाओ, क्योंकि नहीं तो फिर मैं बाद में बताऊंगा इसका मतलब क्या है। That is inertia. Omega is inertia. ठीक है, for the time being ये ओमेगा भूल जाओ। So velocity of the jth particle in the ith iteration, that is equal to velocity of the jth particle in the previous iteration, that is I minus 1th iteration, यानी ये पहला इटरेशन, उसमें उसकी वेलोसिटी कितनी थी वो हमें मालूम होनी चाहिए, प्लस C1 and C2 they are constants. C1 and C2 they are constants. For the time being उस constants को हम 1 ले लेते हैं so that it does not create any confusion. Correct. Okay. R1 and R2 are random. R1 and R2 and R2 are random numbers between 0 and 1. 0 and 1. Correct. They are random numbers between 0 and 1. Correct. तो वो हमें MATLAB से जनरेट करने हैं। तो MATLAB will generate these random numbers for us. C1 और C2 फॉर द टाइम बीइंग आप ऐसा एज्यूम कर लो कि वो 1 है, नहीं तो क्या है कि कंफ्यूजन होगा। फॉर द टाइम बीइंग जो मैं एग्जांपल लेने वाला हूं उसमें आप एज्यूम कर लो कि वो 1 है, तो फिर वो C1 C2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देन पार्टिकल बेस्ट, विच पार्टिकल, जेथ पार्टिकल। सो इट्स बेस्ट पोजीशन, बेस्ट पोजीशन किसकी, जेथ पार्टिकल की, माइनस its position in the previous iteration. X is position, V is velocity. Correct. Plus C2 into R2, C2 is 1, R2 is a random number. Global best minus the position of that particle in the previous iteration. I minus 1 means previous iteration. अभी हम कौन सा iteration consider कर रहे हैं, ith iteration. I know these equations are difficult to understand. और ये इक्वेशन को जब मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तभी आपको पता चलेगा। तो अभी आपको सिर्फ 50% पता चले, देन ऑल्सो डोंट वरी। इवन इफ यू अंडरस्टैंड ओनली 50% ऑफ व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, प्लीज डोंट वरी। करेक्ट। जब मैं एग्जांपल समझाऊंगा तब आपको 100% पता चलना चाहिए। एट दैट टाइम आई विल अगेन आस्क वेदर यू हैव अंडरस्टूड 100% और नॉट। तो अभी जो मैं इक्वेशंस दिखा रहा हूं उसमें सिर्फ आपको 50% ही पता चलेगा। ओके, don't worry. Correct. It will become more clear when we take one example, because I am going to use all these equations, all these 3 equations in example. Okay, I will not use this inertia. ठीक है, otherwise it becomes complicated. तो मैं ये 2 equations अभी यूज करूंगा, फिर ये inertia वाला कैसे यूज करना है वो मैं बाद में दिखाऊंगा। ठीक है। Okay, so now
Once you have got velocity of the jth particle in the ith iteration, means you have got this velocity of the jth particle in the ith iteration, then you can update the position of that particle. So updating the position of the jth particle in the ith iteration. So this is x of j is a position. So xj of I, that is equal to its previous position plus its velocity. Velocity of the jth particle in the ith iteration for all the 10 particles. Here we have assumed that n is 10 because I told you 10 students. Correct. So ultimately, see what is happening. See, this is our room in which all the students are moving. So initially they have this position. Correct. Suppose all the students are having some random positions in the room. Then what will happen? Each and every student will evaluate its velocity, that is v of j. And then once its velocity is evaluated, then it will change its position. Correct. So all the students will try to go towards the student who has found the maximum coin value. Correct. So each and every, and then its position will be updated. So this student may go here. Correct. This student may go here because here one student has found out a coin which is having the maximum value. So each and every student is having some velocity. It is updating its position. So how it is updating its position? With this equation. With this equation. Correct. That xj of I, x is the position. So position of the jth student in the ith iteration, or I am saying position of the jth particle in the ith iteration, that is, that is equal to its previous position. That is previous position. Previous position means its position in the previous iteration plus its velocity. Plus its velocity, which we found out here. Correct. And this inertia, I will talk about it at a later stage. Otherwise, it will create a lot of confusion. Correct. तो अब हमें PSO समझना है एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से. तो हम कैसे समझेंगे? So now I have taken this example from one of the books, that is Engineering Optimization Theory and Practice by S. Rao. Correct. Okay, so this example has been taken from this book, and I will make you understand the working of a PSO with the help of this example. So now we have one objective function fx. So this is our objective function, and we are having only one decision variable. एक ही decision variable है x. You can see here there is only x. Only one decision variable. Equation ऐसा नहीं है कि x1 square minus 2 plus x2, या ऐसा कुछ इक्वेशन नहीं है. ठीक है. अगर x1, x2, x3 ऐसा है तो डिसीजन वेरिएबल्स ज्यादा हो जाएंगे. x1 एंड x2 ये दो डिसीजन वेरिएबल हो गए. अगर x3 आ गया तो तीसरा डिसीजन वेरिएबल आ जाएगा. ठीक है. तो यहां पे आप देख सकते हो कि देयर इज ओनली वन डिसीजन वेरिएबल. डिसीजन वेरिएबल का मतलब क्या है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी, फाइंड द मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन. मैक्सिमम यानी हमें fx को मैक्सिमाइज करना है यूजिंग PSO, यूजिंग पार्टिकल्स फॉर्म ऑप्टिमाइजेशन. तो मैं x की वैल्यू कितनी रखूं ताकि मुझे fx की वैल्यू मैक्सिमम मिले. करेक्ट. सो आई एम ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द फंक्शन. आई टोल्ड यू व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन, either minimizing or maximizing. Fine. Okay. So now here what I am trying to do is I am trying to find the maximum using PSO, और x is my decision variable. तो मैंने आपको बताया था कि decision variables की हमेशा लिमिट होती है. जैसे मैंने बताया था कि if I want to minimize the cost of an induction motor, तो induction motor की cost diameter और length पे डिपेंड करेगी. अब diameter जो है it should not be below a certain limit, it should not exceed a certain limit. तो वो जो limits होती है, that are the limits on decision variable. Correct. Okay. So similarly here also you can see that this decision variable x has some limits. So this limit is between -2 and +2. Correct. For the time being, we have assumed the number of particles are 4. Okay. Now see what we have to do is initially we have to generate random positions between -2 and +2, because our design space or the variable actually the
लिमिट्स ऑन डिसीजन वेरिएबल्स इज बिटवीन -2 एंड +2। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एक रूम दिया गया था, सो दिस इज द लिमिट, इसके अंदर ही आपको ये सब सर्च करना है, ठीक है, तो दिस इज द लिमिट, करेक्ट, कि इस रूम के अंदर सर्च करना है, ठीक है। तो डिसीजन वेरिएबल्स जो हैं उसकी भी लिमिट होती है, करेक्ट। सो हियर यू कैन सी दैट x इज बिटवीन -2 एंड +2। तो इनिशियली जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स विल हैव सम रैंडम पोजीशंस, एक स्टूडेंट यहां पे होगा, एक स्टूडेंट यहां पे होगा, एक स्टूडेंट यहां पे होगा, लेकिन वो रूम के अंदर होगा, तो उसकी पोजीशन रैंडमली पहले हमें जनरेट करनी है। तो यहां पे भी हमें जो है उस बिटवीन -2 एंड 2 वी हैव टू जनरेट सम रैंडम पोजीशंस दैट कैन बी इजीली जनरेटेड यूजिंग मैटलैब। So let us assume that the random positions generated using MATLAB are -1.5, 0.5, and 1.25. Correct. So initially, one particle is at -1.5, other particle is at 0, third particle is at 0.5, and fourth particle is at 1.25. Correct. Okay. Now, what we have to, these are the initial positions. अब हम पहले क्या करेंगे? What we will do is x1 equal to -1.5. वो हम इस इक्वेशन में रखेंगे। So I will put this x1 equal to -1.5 in place of x. Correct. And these are initial positions. इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं x1 at 0, x2 at 0, x3 at 0, and x4 at 0. 0 indicates iteration number, but this is initial position. Correct. So that's why we are writing 0. This is the initial position. तो पहले x1 at 0 कितना है? -1.5. See, can you see here? All these values which are generated are between -2 and +2. ये सभी x1, x2, x3, x4 की values देखो. They are always between -2 and +2. Why? Because this is our search space. तो जब भी मैं ऐसे स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि भाई आपको ये सर्च करना है, तो ये सभी स्टूडेंट्स इस रूम के अंदर होने चाहिए, because this is our search space. तो हमारे यहां सर्च स्पेस क्या है? बिटवीन -2 एंड +2. सो ऑल द 4 पार्टिकल्स जिसकी जो रैंडम पोजीशंस हैं, इट इज बिटवीन -2 एंड +2, ठीक है। सो x1 at 0 is -1.5, x2 at 0 is 0, x3 at 0 is 0.5, and x4 at 0 is 1.25. Now you will ask me, ये numbers कैसे जनरेट हुए between -2 and +2? They are generated randomly using MATLAB. Inbuilt function is available in MATLAB, RAND, you can generate. Correct. I'll show you how it can be done if time permits. Correct. Okay. अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले x1 at 0 that is -1.5. तो -1.5 है जो इस इक्वेशन में मैं रखूंगा x की वैल्यू, ठीक है। ये जो हमारा इक्वेशन है -x² + 2x + 11, उसमें मैं रखूंगा। तो -1.5² + 2 × 1.5 + 11, तो वो जो मैं वैल्यू इवेल्युएट करूंगा, दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 5.75, ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू क्या है? 0, तो वो मैं जब f of 0 इवेल्युएट करूंगा तो इट टर्न्स आउट टू बी 11। फिर f of 0.5 जब मैं इवेल्युएट करता हूं तो इट कम्स आउट टू बी 11.75, एंड f of 1.25 यानी x की वैल्यू जब मैं 1.25 रखता हूं तो इट कम्स आउट टू बी 11.9375। अब देखो, ये तो हमारा पहला इटरेशन अभी हम करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है पार्टिकल बेस्ट जो है, हमारे पास प्रीवियस कोई नहीं है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, हमने क्या बोला था कि हमें पी बेस्ट और जी बेस्ट असाइन करना है। तो पी बेस्ट और जी बेस्ट, पार्टिकल बेस्ट एंड ग्लोबल बेस्ट, ये हम कैसे असाइन करेंगे? सी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी, अभी क्या होगा कि पी बेस्ट 1 जो है -1.5 ही असाइन कर देना है और कुछ नहीं करना है। पी बेस्ट 2 जो है वो 0 जो है उसको असाइन कर देना है। पी बेस्ट 3 जो है वो 0.5 को असाइन कर देना है, और पी बेस्ट 4 ये जो है 1.25 उसको असाइन कर देना है। अब जी बेस्ट कैसे डिसाइन करेंगे? ग्लोबल बेस्ट। तो सी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द मैक्सिमम। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द मैक्सिमम। तो फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स आई एम गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx? I have to find for which value of x I am getting the maximum value of fx. So please try to understand. पहले हमने x की वैल्यू क्या रखी थी? -1.5, -1.5। तो उसमें से हमें कौन सी वैल्यू मिली?
5.75. Okay, it is creating a lot of confusion. So let me remove this. Let me discard all these annotations now. Just a minute. Okay. So now, again, let me show it. So first of all, I put the value minus 1.5 in this equation of fx. Correct. So what is the value of fx which I got? 5.75. Similarly, then I put x equal to 0. So which value I was getting? 11. In this way, for which value of x I am getting the maximum value of fx? You can see here fx is 5.75. Here it is 11. Here it is 11.75, and here it is 11.9375. So for x equal to 1.25, I will be getting the maximum value of fx, because you can see here it is having the greatest value. And ultimately what we are doing? We are finding the maximum. So G best will be 1.25. This will be, because for this value of x, I am getting the maximum value of, okay, actually this mouse is not working properly, but I hope that this 1.25 will be our G best, because for this value of x, I got the maximum value of fx. And all others, please assign this as P best 1 for the time being. Sorry, this one. Minus 1.5 is P best 1. 0 minus 1.5, this one is P best 1. 0 is P best 2. 0.5 is P best 3. 1.25 is P best 4, but this is also G best. G best means global best. Why this is G best? Because for this value of x, I am getting the maximum value of fx. Okay, is this clear up to this point? Yes, sir. Okay. See, please pay attention, otherwise it will be difficult for you to understand. So I hope each and every participants who are there in this webinar are paying attention properly. If you pay attention, you will really enjoy this. Correct? Okay. So now, initially what we have to do is, you have to initialize all the velocities to 0. Initialize all the velocities to 0. So we have 4 particles. So V1 at 0, V2 at 0, V3 at 0, and V4 at 0 as 0. And I told you that initially you keep particle best 1 as minus 1.5, P best 2 as 0, P best 3 as 0.5, and P best 4 as 1.25. And I told you why G best is 1.25. Because for this value of x, which value? For x equal to 1.25, I am getting the maximum value of fx. Okay, now I have got these values. Now I have to find the velocities. So velocities का equation क्या था? So Vj of I, that is velocity of the jth particle in the ith iteration, means it was this equation. That is equal to velocity, its velocity in the previous iteration, into omega. ये omega जो था, that we have neglected for the time being. That is inertia we have neglected for the time being. फिर वो मैं बाद में बताऊंगा inertia का मतलब क्या है, क्योंकि हर एक पार्टिकल का इनर्शिया होता है. सी, चलो मैं थोड़ा समझा देता हूं. मान लो कि आपका जो फ्रेंड है वो ऐसा बोलता है कि भाई ये प्रोजेक्ट करेंगे ना तो अच्छा रहेगा, तो थोड़ा तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये जो बोल रहे हो सही है, लेकिन आपका खुद का भी एक इनर्शिया होता है ना कि भाई ये करे या ना करे. करेक्ट? शुड वी इनकॉर्पोरेट दिस थिंग इन आवर प्रोजेक्ट और नॉट? शुड वी गो इन दिस डायरेक्शन और नॉट? तो अल्टीमेटली देखो, वी आर ट्राइंग टू मिमिक नेचर, वी आर ट्राइंग टू मिमिक this swarm, nature of the swarm. ठीक है, तो जैसे मान लो कि आपका फ्रेंड बोलता है कि भाई चलो इस दिशा में जाएंगे तो अच्छा रहेगा, let us go in this direction, we will find a good solution, we will be able to find a good coin. तो उसको गुड कॉइन मिला तो है, यानी आप उस दिशा में जाओगे तो सही, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है अंदर से कि भाई यहाँ पे चलो मैं जाता तो हूं, लेकिन रास्ते में शायद मुझे कोई और अच्छे वैल्यू का कॉइन मिल जाए, तो आपका एक खुद का भी एक इनर्शिया होता है. सो दैट इज सिमुलेटेड यूजिंग ओमेगा, बट फॉर द टाइम बीइंग वी हैव नेग्लेक्टेड दैट ओमेगा. करेक्ट? ओके, सो एज टू मेक थिंग्स सिंपल. ओके, फिर मैंने आपको बताया कि ये जो C1 है और C2, ये जो C2 है, C1 एंड C2, करेक्ट, उसको जो है
मैंने assume कर लिया है 1. Correct. इसलिए you can see here in this equation C1 and C2 are not appearing in the equation which is shown below. So C1 into R1, but I have assumed that this C1 is 1 and C2 is 1. That's why they are not appearing in these equation. So C1 is 1 and C2 is 1. So directly it is R1, that is a random number. P best of J minus Xj of I minus 1 plus R2, that is a random number, into G best minus Xj of I minus 1. And here I have assumed that there are 4 particles. So J equal to 1, 2, 3, 4. Fine. For all these 4 particles, we will apply this equation. Okay. अब क्या होगा देखो, velocity of the jth particle यानी velocity of the first particle in the first iteration, that is equal to velocity of the first particle I minus 1 यानी initial velocity. अब उसकी जो initial velocity है v1 at 0, वो तो 0 ही है for the time being, initial velocity. So initially this part Vj at I minus 1 will be 0 plus R1, some random number. We have assumed that R1 random number is 0.3294 and R2 random number is 0.9542. This can be easily generated using MATLAB between 0 and 1. ठीक है, तो अब हमने P best of J. अब P best of J यानी पोजीशन बेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, वो कौन सी है? यहां पे हमने फाइंड की थी P best of J, that is minus 1.5. P best of 2, that is our initial positions, that is 0.0. P best of 3, that is 0.5. So we'll put all these values here. Correct. Okay. Plus R2 into G best minus of Xj of I minus 1. Let us put all these values so that you will understand. So now velocity of the first particle in the first iteration, that is equal to its initial velocity. That's initial velocity is 0 plus this random number 0.3294 plus P best of 1, that was minus 1.5, minus minus it becomes plus, so it will become plus 1.5 क्योंकि उसकी position भी वही है ना. What is Xj of I minus 1? Xj of I minus 1 is the position of that particle और P best भी वही है, तो first iteration में तो वो दोनों same रहेंगे. ठीक है, that is its position. Correct. So now this will be minus of minus, so it becomes plus this random number R2. This is our G best. G best जो है हमने सोचा था, sorry हमने जो ढूंढा था, that was 1.25 minus its position. What is its position? Position was, you can see here, the position is minus 1.5. So minus minus, it becomes plus. So this minus minus, here it becomes plus 1.5. Here you can see it is plus 1.5. And you will get velocity at the end of first iteration. Kiski velocity? Velocity of the first particle. Similarly, velocity of the second particle at the end of first iteration, that is equal to this initial velocity 0 plus this random number plus this P best plus this second G best तो 1.25 है और उसकी पोजीशन क्या थी second particle की? 0. How? You can see here. Its position, you can see here. Initially, its position x2. What was that position? That position was 0. Correct. Okay, so that we have kept in this equation. Correct. So in this way, we find out the velocities of all the 4 particles. Means I have found out, or I have used up this equation. Velocity of the jth particle in the first iteration. Now what I have to do? Now I have to update the positions. The position कैसे update करेंगे? So if we go back to that equation, position of the jth particle in the ith iteration, that is equal to position of the jth particle in the previous iteration plus velocity of the jth particle in the ith iteration. This is the equation. Correct. Okay. So now, how do we update the position? So now, position of the first particle, that is equal to its initial position. Its initial position, you remember, it was minus 1.5. Correct? If we go back, here you can see, its initial position is minus 1.5.
Correct. Its initial position was minus 1.5. Correct. That you can see here. So position of the first particle at the end of first iteration, that is minus 1.5 plus velocity. What is the velocity? Here you can see velocity of the first particle, 2.6241. That you add it. Okay. So you get the new position, 1.1241. So this is the position of the first particle in the first iteration. Then this is the position of the second particle in the first iteration. Again, that is equal to its initial position plus velocity. So velocity uski kitni thi? 1.1927. That you can see here. So that has been added. So you get the new position. तो ऐसा हो रहा है ना कि देखो ये जो है स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स हैं, वो क्या पहले इनिशियली सब अलग अलग जगह पे थे, ठीक है, and now they are changing their positions because they are trying to go towards the global best and they are having some velocities too. Correct. So हर एक की अपनी एक वेलोसिटी है, ठीक है, और वेलोसिटी के हिसाब से वो अपनी पोजीशंस बदल रहे हैं. Correct. So in this way, all the four particles have changed their position. But can you see here one thing? कि ये जो fourth particle है, उसकी पहले क्या पोजीशन थी? 1.25 और अभी क्या पोजीशन है? 1.25. Means it has not changed its position. Why? Let us see. देखो fourth particle जो था उसकी पोजीशन क्या थी? 1.25. And for x equal to 1.25, you can see here, for x equal to 1.25, you are getting the maximum value of fx. You are getting the maximum value of fx. fx is 11.9. That is maximum value. दूसरे में आप fx देखो, सब में कम है. एक में 5.75 है, एक में 11 है, एक में 11.75 है, और इसमें 11, because that was our global best for this iteration. So can you see all other particles are moving? Means all other students are moving in this particular iteration. But the student who found out the coin, which was having the maximum value, that has not moved. That has not moved. Correct. Can you see? ये जो स्टूडेंट था पहले उसकी पोजीशन थी -1.5, ये जो पार्टिकल था, अब वो कहां पे गया? 1.12 की तरफ. दूसरा जो स्टूडेंट था पहले उसकी पोजीशन थी 0, अब वो कहां पे पहुंचा? 1.1927. तीसरा जो था उसकी पहले क्या पोजीशन थी? 0.5, वो पहुंचा 1.2156 पे. और चौथा जो स्टूडेंट था देखो वो उसकी पहले क्या पोजीशन थी? 1.25. दैट यू कैन सी हियर. और अभी भी क्या उसकी पोजीशन है? 1.25. इट हैज नॉट मूव्ड. व्हाई? बिकॉज फॉर द टाइम बीइंग इट वाज ऑलरेडी एट ग्लोबल बेस्ट. वो स्टूडेंट नहीं हुआ और बाकी जो स्टूडेंट्स है उसकी तरफ मूव होने लगे. So ultimately, this completes our first iteration. Okay, let me ask: is this clear up to this point? If you have any Yes, questions, sir. you can. If you have any questions, you can ask. Huh? Is it clear? Yes, sir. Okay. See, I am trying to Yes, sir. make you understand with a very Yes, sir. simple example. Fine. Okay. So now, अब हम क्या करेंगे? Now what we will do is, so now we found out the new values of x1, x2, x3, x4 in this first iteration. Correct? तो अब जो है ये x1 की वैल्यू जो है 1.1241 वो हम fx में रखेंगे. यानी what we will do is, in this fx equation again we will put these new values of x1, x2, x3, x4 and we will find new values of fx. We will find new values of fx. So first of all, now we will put this value. Correct. Which value? This value, 1.1241, this value. In that equation, हमारा जो fx का equation था, and we will find fx. Then next जो है हम ये value रखेंगे. Correct. 1.1927, and again we will find fx. Correct. So now what will happen? So f of x1 at 1. Now we have put this value and we have found out fx, that is 11.9846. Then f of x2 at 1, यानी दूसरी वैल्यू हमने x की रखी. So this is the position of the second particle at the end of first iteration and we are getting this fx.
This is the position. And when we find this fx, we get this objective function value. Similarly, we put this x3 and we put this x4. Now again, we have to check for which value of fx I am getting maximum value, for which value of x I am getting the maximum value of fx. तो मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हो कौन सी है, 11.9846, यानी कौन सी पोजीशन के लिए, x1 at 1, बिकॉज उसके यहां पे देखो इट इज 11.96, this is 11.95 and this is 11.93, so which is the maximum value? 11.98. So now our g best will change, global best. अब वो कौन सा हो जाएगा, ये जो हमारी पोजीशन है x1 की जो पोजीशन है, that will be our global best, तो x1 की पोजीशन क्या थी, तो here you can see the position of x1 was, you see this, okay, now let me change the color, just a minute so that it becomes properly visible. Here you can see x1 की जो पोजीशन थी वो क्या थी, 1.1241, so that will become our g best, global best for first iteration. Initial में g best हमारा अलग था. So now can you see here, ये जो g best है it is now 1.1241 और p best भी सभी चेंज हो जाएंगे. क्यों p best चेंज होंगे? Please try to understand this. See, now for this, okay, now let me remove all these annotations so that otherwise it is becoming very clumsy now. Okay, now see, p best भी सब बदल जाएंगे. Why? Because you see here कि for this value of x1, ठीक है, मुझे वैल्यू क्या मिली fx की, 11.98, that is x1 at the end of first iteration. और x1 at 0 जो था, x1 at 0, उसके लिए मुझे fx की वैल्यू क्या मिल रही थी, you can see here it is 5.75. ठीक है, तो हमारा जो पहले p best 1 था वो -1.5 था, p best 1 था वो -1.5 था, लेकिन अब वो बदल जाएगा. क्यों? क्योंकि -1.5 जब मैंने रखा fx में, तो fx की वैल्यू जो मुझे मिली वो 5.75 थी, लेकिन जब मैंने ये वैल्यू रखी, 1.1241, when I put this value of x in fx, मुझे fx की वैल्यू क्या मिली, मुझे जो fx की वैल्यू मिली वो 11.9846. तो पहले 5.75 था, अब 11.9846, यानी पहले जो p best 1 था मेरा वो -1.5 था, -1.5 के लिए मुझे कौन सी वैल्यू मिल रही थी, 5.75, और ये 1.12 के लिए मुझे fx की वैल्यू क्या मिल रही है, 11.98. So this is a more better value now because we are maximizing. So p best 1 will change. Similarly, p best 2 will also change. Why? Because for this value I am getting 11.96. For this value x2 at 1 I am getting 11.96. ठीक है, कौन सी वैल्यू के लिए, for this value of x 1.19. ओके, और पहले उसकी पोजीशन क्या थी, 0. पहले उसकी पोजीशन क्या थी, 0. तो 0 के लिए मुझे क्या मिल रहा था, लेट अस सी. 0 के लिए मुझे fx की वैल्यू क्या मिल रही थी, यू कैन सी हियर it was 11. So पहले for x equal to 0 I was getting 11, and here for x equal to 1.1927, for x equal to 1.1927 I am getting fx equal to 11.9629, means I am getting a better value as compared to the previous one. So this p best 2 will also change. So this p best 2 now will become 1.1927. In this way, p best 3 will change, p best 4 will also change, and I have already explained how g best is calculated. फिर again, अब हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस जो हमने पहले किया था. पहले हमने क्या किया था, यही इक्वेशन लगाया था, velocity of the jth particle in the ith iteration, that is equal to velocity of the jth particle in the previous iteration plus all this stuff.
तो अगेन हमें वही करना है. So now what we have to do is velocity of the first particle in the second iteration. Velocity of the first particle in the second iteration, that is equal to its initial velocity plus these random numbers r1 and r2. फिर से हमें यही इक्वेशन लगाना है. p बेस्ट ऑफ j, हमारा p बेस्ट क्या था 1.1241 और अभी हमारी पोजीशन क्या आई 1.1241, तो वो भी यहां पे ही लगानी है. And in this way, we will calculate the velocities of all the 4 particles at the end of second iteration. Correct. This is velocity of the second particle at the end of second iteration. Then we have the velocity of the third particle at the end of second iteration. Correct. And in this way, we calculate all the velocities. Once we have calculated all these velocities, then what we have to do is, again, we have to update the position. Correct. तो पोजीशन कैसे अपडेट करते थे? If you remember, let us go back and see this equation. So position of the jth particle in the ith iteration, that is equal to position of the jth particle in the previous iteration plus velocity. That is velocity of the jth particle in the ith iteration for all the particles 1 to n. Here we are having 4 particles, so 1, 2, 3, and we have to go up to 4. Correct. Okay. So now, in this way, we update the velocities and then we update the positions. So now, compute the positions. Correct. So now this is the position of the first particle at the end of second iteration. This is the position of the second particle at the end of second iteration. Position of the third particle at the end of second iteration, and position of the fourth particle at the end of second iteration. So in this way, we get all the positions. But here there is one mistake. यहां पे आप देखो तो ये बुक में एक छोटी सी मिस्टेक है विच आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि अभी जो नई पोजीशंस आ रही है वो 3.74, 2.35, 1.8 एंड 1.18. अब अगर ऐसी पोजीशंस आती है तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो अब ये जो है इसमें क्या प्रॉब्लम है आप देखो. लेट अस गो बैक. ठीक है, हियर यू कैन सी दैट x शुड बी बिटवीन this x should be between -2 and +2. It should be between -2 and +2. That is our variable limit. Correct. Now here you can see ये x की वैल्यू क्या आ गई आप देखो यहाँ पे 3.74. This is 2.35. इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 10 स्टूडेंट्स को टास्क दी थी कि भैया रूम के अंदर आपको कॉइन्स ढूंढने हैं, लेकिन ये जो स्टूडेंट है उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा थी कि वो रूम के बाहर निकल गया. तो क्या करना पड़ेगा? उसको फिर से रूम के अंदर उसको ले जाना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी उसकी ज्यादा थी. ठीक है, तो अगेन ये जो 3.7 है वी हैव टू इनिशियलाइज इट टू 2 बिकॉज 2 इज द मैक्सिमम वैल्यू परमिटेड. सिमिलरली ये 2.35 है, इसको भी क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू इनिशियलाइज इट टू 2. अगर मान लो कि -2 से कम आता है, मान लो कि 2.5 आ जाता है, तो उसको -2 पे फिक्स करना पड़ेगा. मान लो कि ये स्टूडेंट जो है मान लो कि यहां पे बाहर निकल जाता है इस दिशा में, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है क्योंकि वो ढूंढ रहा है कॉइन. सो इज रनिंग अराउंड इन द सर्च स्पेस. तो फिर से उसको यहां से वी विल हैव टू ब्रिंग हिम इन कि भाई आपको इस रूम में ही ढूंढना है और कहीं पे भी नहीं ढूंढना है. ठीक है, ओके. एंड देन अगेन वी हैव टू evaluate fx. So in this way it continues. Again we have to evaluate fx for these values of x. Correct. And this will continue until and unless all the particles converge to a specific value. Correct. To a specific value means to a specific position. And for that value of position or for that value of x, you will get the maximum value of fx. You will get the maximum value of fx. Correct. Okay. So in this way PSO works. Here we had only one decision variable x. Correct. But there can be more decision variables. जैसे मान लो कि यहाँ पे x ही था, वहां पे x, y, z या ऐसा बहुत सारे हो सकते हैं decision variables. Correct. Okay. So if we take more number of decision variables, then it becomes difficult to explain. तो अभी मैंने समझाने के लिए सिर्फ एक decision variable लिया था. करेक्ट.
Okay, now let me ask all the students who are present in the meeting. Is this process clear to you how this PSO is working? If you have any questions, please ask. I would be happy to answer. Yes, sir. Okay. See, if at any point of time you are not able to understand, you can interrupt me. Those students who are there in the meeting, correct? They can interrupt me because now it should be clear to you how PSO works. Correct. Okay. Fine. Okay. So now see, so ultimately see what is happening. Let us assume that we are trying to find the maximum of a particular function. Correct. And these are all the particles which are moving around in this search space. So this is a contour. Correct. Okay. And we want to find the maximum. So all these particles, they will move around in this search space, which is one room. Correct. And ultimately see what will happen is all will converge to a particular position, because for that value you are getting the maximum value of objective function. करेक्ट. ओके, तो अल्टीमेटली क्या हो जाए, सभी एक जगह पे कॉन्वर्ज हो जाएंगे. इस तरह से जो है ये पूरा चलेगा. ठीक है. तो जैसे मान लो कि इनिशियली जो है सब बिखरे हुए हैं पार्टिकल्स, एंड देन व्हाट विल हैपन, दे विल ऑल स्टार्ट कन्वर्जिंग टू अ पर्टिकुलर पोजीशन फॉर व्हिच यू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx. करेक्ट. ओके, नाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस बेटर. करेक्ट. अभी देखो मैंने इनर्शिया नहीं समझाया है. ठीक है, वो मैं चलो बाद में समझाता हूं कि व्हाट इज इनर्शिया. सो नाउ लेट सी, अल्टीमेटली मान लो कि अब आपका प्रॉब्लम है और आपको ऑप्टिमाइजेशन करना है. ठीक है, यूजिंग पार्टिकल सॉर्म ऑप्टिमाइजेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू चेक योर लॉजिक और यू हैव टू चेक योर प्रोग्राम ऑन ए स्टैंडर्ड बेंचमार्क फंक्शन. देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. मान लो कि आपको कोई एक प्रोग्राम लिखना है. यू वांट टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर. अब आपने ये प्रोग्राम लिख दिया. अब आपको मालूम नहीं है कि आपने जो लॉजिक लगाया है वो सही है कि नहीं. द लॉजिक विच यू हैव अप्लाइड, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, यू वांट टू चेक इट. देन व्हाट यू शुड डू, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड चेक योर प्रोग्राम ऑन सम स्टैंडर्ड बेंचमार्क फंक्शन. देयर आर मेनी बेंचमार्क ऑप्टिमाइजेशन फंक्शंस अवेलेबल. You type on Google and you will get it, benchmark optimization function. So first of all, what you have to do is you have to check your logic or your program on some standard benchmark function, and then you have to use this program for your problem. मान लो कि आपका प्रॉब्लम क्या है, you want to minimize the cost of a motor. तो आपने ये PSO का प्रोग्राम तो लिख दिया, लेकिन आपका प्रोग्राम सही है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, आपका लॉजिक सही है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा. तो आपको पहले अपना प्रोग्राम कोई बेंचमार्क फंक्शन पे रन करना पड़ेगा. तो बहुत सारे बेंचमार्क फंक्शंस अवेलेबल हैं. उसमें से एक फंक्शन है हिमेल-ब्लॉ फंक्शन. ये जो है दिस इज द हिमेल-ब्लॉ फंक्शन. इसमें आप देख सकते हो देयर आर टू डिसीजन वेरिएबल्स, x1 एंड x2. उसमें सिर्फ x था, इफ यू रिमेंबर. ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, वी वांट टू मिनिमाइज दिस. इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है. तो अगर हमें क्या फाइंड करना है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ x1 एंड फॉर विच वैल्यू ऑफ x2, फॉर विच वैल्यू ऑफ x1 एंड फॉर विच वैल्यू ऑफ x2 I will get fx equal to minimum. This I want to minimize. This I want to minimize. Correct. Okay. So now for which value of x1 and x2 I will get the minimum value of fx. तो देखो इसका आंसर हमें पहले से मालूम होता है, तो हम चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा जो प्रोग्राम है वो सही है कि नहीं. ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्क्वायरिंग फंक्शंस हैं. यू कैन सी देयर आर स्क्वायरिंग, स्क्वायर, होल स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे भी होल स्क्वायर है. इट मीन्स कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो कभी आएगी ही नहीं फंक्शन की, बिकॉज इट इज होल स्क्वायर. तो नेगेटिव वैल्यूज कैनॉट अपीयर. फाइन. सो by looking at this function, I can say that for x1 equal to 3, for x1 equal to 3, and for x2 equal to 2, and for x2 equal to 2, अगर मैं ये वैल्यूज रखता हूं, x1 की 3 और x2 की 2,
then can you see that you will get this function f of x1, x2 equal to 0? See, you put this 3 here. तो यहाँ पे क्या आएगा 3 square, that is 9. यहाँ पे क्या आएगा 3 square, that is 9. यहाँ पे x2 is 2, so 9 plus 2, that is 11. So 11 minus 11, so that is 0. Plus यहाँ पे x1 equal to 3, so put this 3. x2 square, so 2 square, that will be 4 minus 7. So this function value will be 0. Negative values तो आ नहीं सकती because it is whole squared. Correct. So now अगर मैं PSO से ये प्रोग्राम सॉल्व करता हूं और मुझे इस फंक्शन की वैल्यू 0 मिलती है और x1 और x2 की वैल्यूज 3 और 2 मिलती है, then I can be rest assured that my logic is correct. Okay, so for the time being I have assumed that number of particles are 50. हमारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 थे, यहाँ पे मैंने पार्टिकल्स एज्यूम किया 50. ओके, दिस इज द सर्च स्पेस. x1 and x2 की वैल्यूज जो है इट शुड बी बिटवीन 0 and 6. इट शुड बी बिटवीन 0 and 6. हमारा जो प्रीवियस एग्जांपल था उसमें x की वैल्यू क्या थी? -2 और 2 के बीच में लेनी थी. सो दैट वाज आवर सर्च स्पेस. करेक्ट. In research, it has been found out that if you keep C1 and C2 equal to 2, it gives good values. Correct. Functions this PSO performs in a better way. If we keep C1 and C2 equal to 2, C1 और C2 हमने पहले 1 लिए थे, if you remember. Let us go back. See, यहाँ पे जो है C1 और C2. If you remember, these are C1 and C2 constants. This is C1 and this is C2. In research, it has been proved that if you keep C1 and C2 equal to 2, the performance of PSO improves. Correct. Okay, so that's why we are keeping C1 and C2 equal to 2. Correct. Fine. And maximum inertia omega, I am keeping it 0.9 and minimum inertia I am keeping it 0.4. Now you may ask me, भाई ये values कहाँ से आई? Correct. Omega max equal to 0.9 and omega min equal to 0.4. Again, it has been proved in research that if you keep omega max equal to 0.9 and omega min equal to 0.4, then better results are obtained. Correct. So now let us go to the MATLAB environment to check the answer. Correct. So now let us go to the MATLAB environment and let us run the program, correct, to find the answer. Correct. Okay. So now okay. So now let us see this program. I don't know whether it is visible to you or not. Is my MATLAB screen visible to all? Yes, sir. Okay. Okay, fine. Okay. So here you can see this program. I have kept number of particles equal to 50, that you can see here. Number of particles are 50. I have kept C1 equal to 2, C2 equal to 2. Minimum values of x1 and x2 are 0. So here you can see x min is 0 and x max, and maximum values of x1 and x2 are 6. So x max are 6 and 6. Correct. Here you can see omega max and omega min. I have kept it as 0.9 and 0.4 respectively. Correct. Okay. And initially I am making all the velocities to be 0. So these two for loops, correct, these two for loops make all velocities equal to 0. Correct. Okay. Number of trials, or I should say number of iterations, I have kept it to be 200. Okay. Now I told you कि ये जो Himmel-Blow function है, इसका मैंने अभी आपको बताया कि fx की वैल्यू जो है वो क्या आनी चाहिए 0 और x1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए 3, x2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए 2. If I get this answer using PSO, correct, then my logic is correct. Okay, but see, यहाँ पे random numbers are involved. Correct. So initially what will happen is कि हर बार मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो अलग-अलग मिलेगी, but it would be near to 0. fx would be near to 0 and x1 and x2 would be near to 3 and 2 respectively. Correct. Okay. Now one thing. Now let me run this program and check what I'm getting.
Okay. Now, can you see? I have already run this program, and if you are able to see below in the command window, solution has converged in 149 iterations. Function value fx, that is 0, and values of decision variables are 3 and 1.999, that is 2. Means I am getting this answer. Now, if I run this again, sorry. If I run this again, I may get a slightly different value, but it will be very near to the value which I obtained it here. क्योंकि initially सब random positions होती हैं, ठीक है, और फिर वो जो है सब particles move होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर बार 149 iterations में ही converge हो और हर बार हमें यही value मिले, लेकिन जो हमें value मिलेगी वो इसके आसपास ही होगी. So let me run this program again, and here you can see now solution has converged in पहले 149 iterations था. Now here you can see it is 143 iterations. Correct. And values of variables are 3 और पहले जो 1.99 आ रहा था वो अब you can see it is 2.000 something like that. Okay. और अगर आपको देखना है कि particles जो हैं वो किस तरह से search space में move होते हैं, तो I will uncomment this. Correct. And you will be able to see how the particles are moving in the search space. सभी particles जो है 3 और 2 पे converge होने चाहिए. तो मैंने प्रोग्राम में क्या किया है कि I have kept a pause of 0.5 seconds between each iteration so that you can easily see how the particles are moving in the search space. So now I'll again run this program. Correct. And you will see how these particles, they are moving in the search space. Correct. I have kept, or ultimately see, this is our search space between 0 and 6. And you can see all the particles, they are roaming, all the 50 particles. So on the x-axis, you can see there are 50 particles. And on the y-axis, it is between 0 and 6. तो ultimately क्या होगा, सभी particles जो हैं 3 और 2 पे settle हो जाने चाहिए. क्योंकि x1 is 3 and x2 is 2. क्योंकि उसके लिए हमें minimum value of fx मिलता है. ठीक है. So here you can see जैसे students move हो रहे थे search space में, ऐसा assume करो कि ये सब students हैं. ठीक है. They are moving in the search space. ठीक है. All these blue students, they will converge at 3 because they are for x1. And ये जो orange जो students हैं, they are for x2. So ultimately you can see all the students are converging. देखो धीरे धीरे सब एग्री हो रहे हैं कि भाई 2 और 3 ये जो वैल्यूज हैं ये ठीक है. नाउ कैन यू सी हियर, अब बहुत धीरे धीरे मूव हो रहे हैं और नाउ वी हैव गॉट द आंसर. यू कैन सी बिलो ऑन द स्क्रीन. Solution has converged in 151 iterations. Correct. Function value is 0. Value of variables are 3 और 2 आने चाहिए. 3 यानी 2.9999, that is 3. And 1.99, that is 2. So in this way, what happens is that all the actually particles, they move around in this search space, correct? And they try to find the optimum value, correct? Okay. Fine. Okay. Now see, अब many of the students, they ask me कि भाई ये objective function जो है वो हम कैसे बनाएंगे. ठीक है. मान लो कि आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, यू वांट टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ अ मोटर, तो पहले आपको कॉस्ट का पूरा इक्वेशन बनाना पड़ेगा. तो यू विल हैव टू फाइंड एफ ऑफ सी, दैट इज कॉस्ट फंक्शन. ठीक है. मान लो कि ओके, दूसरी बात, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम. ठीक है. मान लो कि एक सेल्समैन है, उसको 10 सिटीज में घूमना है, तो उसको कैसे मूव होना चाहिए सो दैट द टोटल डिस्टेंस विच ही हैज टू ट्रैवल इज मिनिमम. करेक्ट. तो जैसे मान लो कि ये जोमेटो वाला ही है, स्विगी वाला ही है, उसको 10 ऑर्डर्स हैं. ठीक है. 10 जगह पे उसको जाना है अहमदाबाद में. ठीक है. तो पहले वो कहां पे जाएगा, फिर दूसरे कहां पे जाएगा, सो दैट द टोटल डिस्टेंस विच ही हैज टू ट्रैवल इज मिनिमम. तो ये भी आप प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन उसको पहले उसका जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ेगा. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है बनाना,
दैट इज टफ. करेक्ट. मान लो कि जैसे मैंने बोला कि यू वांट टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ए मोटर, तो पहले आपको ये कॉस्ट फंक्शन बनाना पड़ेगा, यानी द कॉस्ट ऑफ ए इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन विच वेरिएबल्स. तो पूरा आपको एफ ऑफ सी इक्वल टू ये पूरा बनेगा, ये कॉस्ट फंक्शन. ठीक है. ओके. तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल्स. मींस डिसीजन वेरिएबल्स मींस ऑन विच वेरिएबल्स द कॉस्ट डिपेंड्स. और जनरली क्या होता है कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स आर नेवर अनकंस्ट्रेन्ड, they are always constrained. Means what happens, the complexity of the problem increases. See, what do you mean by constrained optimization? See, I'll tell you. See, I want to minimize the cost of an induction motor, subject to the condition that its no load losses should not increase 200 watts. Its load losses should not increase 1000 watts. तो ये constrained आ गए. ठीक है. देखो, कंस्ट्रेंट में दूसरी भाषा में आसान भाषा में आपको सिखाता हूं. मान लो कि कोई ऐसा बोलता है कि भाई एक स्टूडेंट को मैक्सिमम ग्रेड लाने हैं, ठीक है, जीटीयू में, तो कितने आवर्स पढ़ने चाहिए उसको? फॉर हाउ मेनी आवर्स शुड ही स्टडी सो दैट ही कैन अटेन मैक्सिमम ग्रेड? तो आंसर आ जाएगा 24 आवर्स, बट दैट इज नॉट अ फिजिबल आंसर. यू नीड टाइम फॉर स्लीप. तो नाउ कंस्ट्रेंट्स आएंगे कि भाई 8 आवर्स फॉर स्लीप, 2 hours for some refreshment, ठीक है, total 1 hour for lunch and dinner. Now you design an objective function and how he should study so that you can get the maximum grades. So optimization problems are never unconstrained. They are always constrained. Correct. तो जब constrained optimization problems आते हैं, then the complexity increases. And real-time problems or real-world problems, I should say, they are always constrained. Correct. So now, see, if you take one constraint, correct. Now I'm considering the same function, this Himmel-Blow function. Correct. But now here you can see that there are some constraints. That I have this decision variable की limits भी मालूम है. But there is one constraint that x1 minus 5 the whole square plus x2 square minus 26 should always be greater than 0. Correct. Okay. So if it is less than 0, तो क्या करेंगे? तो you should impose some penalty. तो अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही पूरा बदल जाएगा. ठीक है. तो अब पेनल्टी कैसे इंपोज करें? ठीक है. How to deal with constrained optimization problems? So constrained optimization problems can be converted into an unconstrained optimization problems by imposing some penalty. अब penalty कैसे impose करेंगे? ठीक है. So you have to tune penalty factors. तो फिर आपको penalty factors को tune करना पड़ेगा. ठीक है. जैसे मैंने अभी बताया कि I want to minimize the cost of an induction motor subject to the condition कि उसकी efficiency इससे कम नहीं होनी चाहिए. तो वो constraint आ गया. सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि भाई उसका टेम्परेचर राइज इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो एक कंस्ट्रेंट आ गया. अब आप ऑप्टिमाइजेशन करो. ठीक है. तो पहले जो था अनकंस्ट्रेन्ड ऑप्टिमाइजेशन था. अब देखो एक कंस्ट्रेंट हमने ले लिया यहाँ पे कि भाई x1 माइनस 5 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 26 शुड बी ग्रेटर देन 0. करेक्ट. ओके. तो अब हम क्या करेंगे? तो वी हैव टू इम्पोज सम पेनल्टी. अब पेनल्टी कैसे इंपोज करेंगे? हाउ टू ट्यून द पेनल्टी फैक्टर्स, दैट इज समवॉट डिफिकल्ट. ठीक है. वो मैं it is not possible for me to cover in this lecture, but I will show you this program कि भाई कैसे जो है हमने पेनल्टी इंपोज की है. करेक्ट. I will show you constrained Himmel-Blow function. So now I am again going back to the MATLAB environment. Now here what we are saying is that you can see that some penalty has been imposed. So here I am seeing that if this x1 is temporary, ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको नाम दे दिया है temporary. तो if you are able to see my MATLAB screen, आप देख सकते हो कि ये जो है if it is less than 0, ये function value, it should be greater than 0, क्योंकि ये हमारा constraint है. आप देखो ये जो constraint है वो क्या है कि x1 minus 5 square plus x2 square minus 26 should be greater than 0. Correct. But if it is less than 0, then you have to impose some penalty. Correct. जैसे मान लो कि कोई बच्चा जो है वो मिड सेमेस्टर में फेल हो जाता है.
तो एक पेनल्टी आएगी ना, उसको रेमेडियल देनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो फिर बाद में पास हो जाएगा, ठीक है। तो जो है ये जो इक्वेशन है, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इफ इट इज लेस देन जीरो, यहाँ पे आप देख सकते हो, देन आई एम, यहाँ पे मैंने इफ एल्स लगाया है, यू कैन सी आई एम इम्पोजिंग सम पेनल्टी. So here you can see there some penalty is imposed in this equation, objective function. ये जो है मेरा objective function, उसमें आप देख सकते हो कि at the last I have imposed some penalty. Correct? Okay. तो अगर मान लो कि if it is greater than zero, तो फिर कोई penalty नहीं आएगी. So here you can see penalty is zero. But if it is less than zero, then you have to impose some penalty. Correct? So now you will get a different value of objective function. So if I run this function, मुझे इसका आंसर मालूम है, इसका आंसर जो fx का nearly 60 के आसपास आना चाहिए. So here you can see the answer. I have run this program, and here you can see that answer which I am getting. See, solution is converged in 176 iterations. पहले function value क्या आ रही थी? 0. Now here you can see function value is not 0. It is 60.37. करेक्ट. एंड डिसीजन वेरिएबल्स जो पहले x1 और x2 3 और 2 आ रहे थे, हियर यू कैन सी इट इज 0.82 एंड 2.93. करेक्ट. ओके, सो नाउ जस्ट अ मिनट, एक्चुअली आई थिंक ड्यू टू मीटर्ड नेटवर्क. Okay, I just don't know whether students are able to see this or not. But are you able to see my MATLAB screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, can you see that solution has converged in 176 iterations? Can you read that properly? Yes, sir. Okay, fine. So constrained optimization problems, they are really difficult. Correct. You need to adjust the penalty factors. अब ये tune कैसे करते हैं, उसकी भी बहुत सारी methods हैं. And it is beyond the scope of this lecture to explain all those methods of tuning the penalty factors, because real world problems are always constrained optimization problems. क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ constraints होते ही हैं. ये तो कोई बोलेंगे भाई सबसे ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं भाई, you work for 24 hours, but it is not possible. There are some constraints. Correct. So putting all those constraints in mind, now how you can earn more money ethically, so that then that problem becomes a constrained optimization problem. Correct. So I hope majority of the students have understood this. Correct. Now I would be happy to receive questions from your side. Correct. I know it is like actually this PSO, all these optimization algorithms, swarm optimization algorithms, they are somewhat difficult to understand, and that's why I had taken a very, very simple example to make you understand as to how this basically works. It is inspired from nature, and how we can use the collective intelligence of all the particles to find the best solution in a particular search space. Okay, so now if you have any questions, I would be happy to answer them. Yes, sir. Yes. The first question is by Parth. Hmm. He's asking that we have seen there are many swarm optimization techniques. How Correct. can we know which one is best for our problem, or the same problem we are discussing? Can it be solved using other optimization techniques? Okay. This is a very good question, because see, there are many swarm optimization techniques. So which one to use? Okay, there is one research paper published, and the title of that research paper is No Free Lunch Theorem. I'll explain what does this mean. This paper states that you don't know that for your problem which optimization technique would be best. So that paper suggests that whenever you are solving any problem, you should solve it by at least 3 different methods. At least by 3 different methods. Means what? You solve your problem using PSO, you solve your problem using ant colony, you solve your problem using Firefly algorithm or teaching learning based, and the answer which you get by comparing all the 3 algorithms, and the best answer which you get, that is your answer. Because it is very difficult to decide that for your problem which optimization technique would
be more suitable. Correct. So this paper, no free lunch theorem paper, it states that whenever you are solving any problem, your problem, using any optimization techniques, you have to apply at least 3 different techniques. 3 different techniques. Correct. Now say, and when the technique by which you get the best answer, that is your answer. Correct. Fine. लेकिन मैं और भी बता दूं कि भाई कुछ तो ऐसा होगा ना कि ये टेक्निक अच्छी है या ये टेक्निक अच्छी नहीं है. तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो देखा गया है उसमें जनरली, नॉट इन ऑल प्रॉब्लम्स, बट in majority of the problems, teaching learning based optimization algorithm is giving good results. But see, for your problem, it may or may not give. So one, you should use TLBO, and then other 2 you can use of your choice. Correct. So you can solve your problem. You should solve your problem by at least 3 different methods. Correct. और उसमें से जो भी आपको जो बेस्ट आंसर आता है वो आपका जो है सॉल्यूशन है. Correct. Okay, any other question? I hope I answered your question. Is it clear? Yes, sir. Okay, fine. Sir, next question. Is it possible that 2 particles can have same position? Yes, it is possible. Why? Because see, you are generating random numbers. So if there are 50 particles, so you are generating 50 different positions in the first iteration. And these these positions are generated by MATLAB random number generator. Correct. No doubt. MATLAB random number generator uses real-time clock to generate the random numbers. So the possibility is very, very less. But if you are using, say, other software other than MATLAB, then it is possible that both the particles can have the same position. Okay, sir. The next question is, where should we use swarm optimization technique? Okay. See, actually, as I told you, okay, this is a very good question. See, traditional optimization techniques तो available हैं ही, तो फिर ये swarm optimization technique क्यों use करें? Why we should go for this modern optimization techniques? क्या ऐसा कोई direct benefit मिल रहा है? बाकी हमारे पास तो बहुत सारी traditional optimization techniques है जो हम mathematics में पढ़े हैं. Okay, let me explain this. Actually, in more detail. Just a minute. Okay, I'll explain on this slide only. Chalo. Suppose this is your decision variable x and this is your objective function f of x. Okay, ये swarm optimization technique क्यों use करें? Please listen to this answer carefully. Suppose now fx varies with x like this. Okay. This is x on the x-axis, and here I am having fx. Okay. अब ट्रेडिशनल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताऊं कि सपोज ट्रेडिशनल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में आप क्या करते हो कि यू स्टार्ट विथ एन इनिशियल वैल्यू व्हिच इज नोन एज द एज्यूम्ड वैल्यू और द गेस वैल्यू. हम गेस करते हैं कि भाई फॉर दिस वैल्यू ऑफ x आई विल गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx. ठीक है. ओके. अब मान लो कि यू स्टार्ट विथ दिस वैल्यू ऑफ x, this value of x. Correct. और for this value of x आपको मिला fx, ये मिलेगा. Means you will get this value of fx. फिर आप क्या करोगे? You will search in the neighborhood कि भाई चलो मैं इस दिशा में जाऊं तो fx की वैल्यू ज्यादा मिलती है on the left side या on the right side. किस दिशा में जाऊं तो मुझे fx की वैल्यू ज्यादा मिलेगी. ठीक है. So now I will vary x. Either I will go on the left hand side or either I will go on the right hand side. For example, if I go on the right hand side, like here, and I evaluate fx, तो fx की वैल्यू मुझे कम मिलेगी. Means मुझे ऐसा पता चलेगा भाई I am going in the wrong direction. So now what I do is I will go in this direction, means on the left hand side, and I will go in this value. I will try to reduce the value of x, and ultimately when I reach here, I will get this value of fx. I will get this value of fx.
अब क्या होगा, अगर मैं राइट साइड में x की वैल्यू बढ़ाता हूं तो भी fx की वैल्यू कम होगी, अगर मैं लेफ्ट साइड में जाता हूं तो भी fx की वैल्यू कम होगी. Means I will be tempted to think that for this value of x, I am getting the maximum value of fx. But ultimately it is not true. This is the local optimum. It is not the global optimum. Global optimum तो ये है, अब ऊपर देखो. Because for this value of x, I am getting the maximum value of this fx. So what happens is that the traditional optimization methods may get stuck in local optimum. I'm not saying it will get stuck in local optimum, but they may get stuck in local optimum. While this swarm optimization techniques, what is the advantage? कि भाई यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे particles हैं which are finding the best solution. तो एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल जो है दूसरा यहाँ पे है, एक पार्टिकल तीसरा यहाँ पे है, एक चौथा पार्टिकल यहाँ पे है, एक पांचवा पार्टिकल यहाँ पे है, और सब एक साथ कम्युनिकेट भी कर रहे हैं. So the probability of catching the global optimum using this swarm optimization techniques is definitely much more as compared to traditional optimization methods. I hope I have answered your question. Is it clear or should I explain it again? No, sir, I hope it is clear. क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनल में क्या प्रॉब्लम होता है कि द मेथड में गेट स्टक इन अ लोकल ऑप्टिमम. आई एम नॉट सेइंग इट विल गेट स्टक, बट इट मे गेट स्टक. While the probability of catching the global optimum, because they are using collective intelligence, एक सर्च पॉइंट नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो अपनी पोजीशन इवेल्युएट कर रहे हैं. ठीक है, तो नेचुरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैचिंग द ग्लोबल ऑप्टिमम इन केस ऑफ अ स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक is naturally much more as compared to traditional optimization method. Okay, any other question? Yes, sir. The next question is from Yogini. She asks, what are the drawbacks and scope of PSO technique? Okay. Actually, see, the drawback is that many of the research many of the problems, actually see, in many of the research papers, they have pointed out that if we keep C1 and C2 equal to 2, the method does not converge. It does happen. In 90% of the cases, it converges. Correct. And generally, research also says that if you keep C1 and C2 constants equal to 2, method performs very well. But in some of the problems, correct, in some of the problems, it does not converge. That is a drawback of PSO. Correct. But the advantage is that it converges in majority of the problems. And that's why majority of the researchers, they are using PSO to solve the problem. And this was the first optimization algorithm, swarm optimization algorithm that came up in 1995. Okay. Okay. Sir. Any other question? Yes, sir. What is chicken swarm optimization? Oh, there, I'm not aware about chicken swarm optimization because there are many swarm optimization algorithms. Actually, there is one optimization, bacterial foraging optimization algorithm. Then there is BAT algorithm, and each and every algorithm is different. Correct. So actually, I'm not about this chicken swarm optimization algorithm. But if you want to study these optimization algorithms in a better way, then there is one book I would like to suggest. That is book by Zixi Yang, XIE, Xi Yang, and he has described all these algorithms in his book. Correct. But there are many, so it is not possible to remember all these. Actually, I had worked on this particle swarm optimization and teaching learning based optimization algorithm. And this teaching learning based optimization algorithm is a very good algorithm because it is parameterless algorithm. Correct. At this point of time, it is not possible for me to explain what is the difference between parametered algorithm and parameterless algorithm, because there are some common control parameters and there are some algorithm specific parameters. So you should always search for that algorithm which has only common control parameters. It does not have any algorithm specific parameters. Then that algorithms are actually, they generally I should say, perform better. Not always.
but they generally perform better. Okay, sir. The next question is by Aman Joshi. Hmm. How this technique is different from supervised and unsupervised learning of machine learning? Okay, supervised and unsupervised is totally different. It comes under the umbrella of artificial neural networks. Correct. This comes under the umbrella of swarm optimization techniques. Actually, see, what do you mean by supervised learning? I would like to tell you that is totally different topic. It comes under ANN, that is artificial neural networks. See, okay, I would like to explain in a very simple way. Suppose, see, what is supervised learning? See, सपोज मान लो कि आपको कोई एक देता है कि भाई ये 10 सम्स आप सॉल्व कर लो मैथमेटिक्स के, ठीक है, कोई तो आप एक बार सॉल्व कर ले, आपको मेथड पता चल कि इससे करना है। फिर 11वां सम जो है वो आपको देंगे, पर 10 सम पहले सिखा देते हैं, ठीक है, कि इस तरह से सॉल्व करना है। फिर 11वां जो होता है प्रॉब्लम, वो आपको ऐसे देंगे कि भाई जिसका जो है आपको जो है सोल्यूशन खुद निकालना है। तो आपने 10 सम्स उसी तरह से सॉल्व किए हैं, तो आप 11वां आप खुद सॉल्व कर पाओगे, इवन दो द डेटा इज डिफरेंट बट द मेथड इज सेम। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि सपोज यू वांट टू प्रेडिक्ट लोड, मान लो कि लोड फोरकास्टिंग करना है कि भाई जो है आज से 1 साल बाद अहमदाबाद का जो है कितना मेगावाट डिमांड होगी लोड। तो यू कैन कंसिडर ऑल द पास्ट पैरामीटर्स, यू कैन ट्रेन द मशीन, दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मशीन लर्निंग, दैट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग, क्योंकि आप डेटा ऑलरेडी दे रहे हो उसको, ठीक है, और फिर आप उसको ट्रेन करो और फिर आपको बोलो, आप उसको बोलो कि भाई नाउ यू प्रेडिक्ट कि भाई ये जो है आज से 5 साल बाद अहमदाबाद का जो है टोटल लोड डिमांड कितनी होगी। तो दैट मशीन विल बी एबल टू प्रेडिक्ट, नो डाउट। जैसे मान लो कि आपने वो एक मूवी देखी होगी क्रिश, ठीक है, उसमें he had actually prepared one machine, he had developed one machine which was able to predict the future. Correct. It is just like predicting the future, no doubt. At present, it is like impossible thing. Correct. Like, who knows what will happen in future? So supervised learning, it is one kind of machine learning. It does not come under the umbrella of this swarm optimization techniques. Or unsupervised learning, जो है, it is totally different. उसमें क्या होता है कि डेटा के क्लस्टर्स बनते हैं, करेक्ट। सो दैट इज टोटली डिफरेंट। सो दीज थिंग्स, supervised and unsupervised learning, they come under the umbrella of artificial neural networks, they come under the umbrella of machine learning, and it is totally different from these swarm optimization techniques. Okay, so here's the last question. How termination of iteration is decided? Okay, that I actually forgot to show. Okay, I will show it in this MATLAB program. Okay. Okay, so here see, what I am doing is I am comparing, I am finding out the error. Here you can see maximum error I am finding. What is this error? Error is the absolute difference between G best and P best. So actually see what happens if all the particle best converge to the global best, then what will happen is G best and P best would be same. Here you can see in line number 87, आप प्रोग्राम में आप देख सकते हो कि मैक्स एरर ऐसा मैंने लिखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ G best minus P best. तो ultimately see what I am doing is if all the particles or if all the students agree कि भाई नहीं अब यही जो कॉइन है उसकी वैल्यू जो है सबसे ज्यादा है, then means that we have reached the solution. But see, some of them may not agree at all. Correct. So actually जो मैक्स एरर में 0 नहीं रख रहा हूं, लेकिन ये जो डिफरेंस है, here you can see difference is less than 0.01. Can you see this problem statement? Sorry, if this program statement 99. If difference is less than 0.01, then I am printing that solution has converged in %d iterations, and I am printing the iteration number, and then I break out of this loop. Correct. So what I am checking is that if all the particles converge to the same value or converge to the same position, which is also the G best. But see, actually, whenever they are converging, the difference may not be 0, but it might be very, very less, say 0.1 or 0.01. So that's why here I am writing if difference is less than 0.01,
between all the particles P best and G best, then we have to converge, means we have to come out of this loop. So here you can see statement number 99, 100 and 101. If difference is less than 0.01, then I'm printing that solution has converged in percentage d iterations, and then I break out of this for loop, correct? And then I'm printing the function value, and I'm also printing the decision value of variables, correct? Is it clear? Yes, sir. Okay, fine. So I have tried to answer all the questions, and I hope that I might have been able to satisfy your curiosity, correct? और पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन मैंने वो इसलिए नहीं दिखाए बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स माइट बी फ्रॉम ईसी, सम ऑफ देम फ्रॉम आईसी, और मेरे पास जो एप्लीकेशन सभी इलेक्ट्रिकल की हैं, ठीक है? If you wish, I can show one of the application if it is there. Say for example, you can see here. Okay, here you can see one journal. It is Elsewhere journal, correct? Science Direct. Capacitor placement of distribution systems using particle swarm optimization approaches. Correct. So there are many applications. I'm just showing one. But how you can, at what location you should place the capacitor, correct, in a power system, correct, so that it results in a better voltage profile and least reactive power consumption, correct. So this is capacitor placement problem of distribution systems using particle swarm. ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, but I'm just showing one here, correct. Okay. Thank you, sir. It was an immensely informative session. Now, as per the guidelines, I insist you all to please compulsorily fill the feedback form mentioned in the description box and thereby get your certificates for attending this wonderful webinar. I request you all to note that certificates will be provided only after filling the feedback form. The form remains open till 2 o'clock. Also, you are requested to mention your unique ID correctly, which is provided to you through mail. Here we come to the end of our webinar. I feel honored to present the vote of thanks on behalf of the entire IEEE VGEC student branch. I would like to thank you, sir, for taking out precious time for us. I would also like to thank all the students for their gracious presence. So here we come to an end of today's webinar. Thank you, everyone. Okay, thank you all.